Hey guys, welcome back to the channel. It's been so long that we have posted the video. So हम आज शुरू करेंगे बुक्स के बारे में. So this whole video will only for the first year student जिसने अभी अभी फिलहाल एडमिशन लिया है डेंटल में. So welcome to the channel and welcome to the field of dentistry as well. So हम आज शुरू करेंगे बुक्स के बारे में. So जब पहले पहले कॉलेज में आते हैं तो पहले तो पता नहीं होता है क्योंकि टोटल एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, कॉलेज का इन्वायरमेंट हो जाता है, या फिर नीट से डायरेक्टली जंप करना पड़ता है उधर एमसीक्यू टू द थ्योरेटिकल पोर्शन एंड देन आफ्टर प्रैक्टिकल पोर्शन भी रहता है. सो जस्ट दैट इज द सब्जेक्ट्स. ओके, सो व्हाट आर द सब्जेक्ट दैट यू नीड टू स्टडी इन द फर्स्ट ईयर फॉर द फर्स्ट ईयर बीडीएस इज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद द anatomy. So now anatomy, the anatomy is the second after is physio and biochem is physio biochem. Then after third is DADH, that is dental anatomy, dental histology. Okay, A for anat and H for histology. Okay, so these are the three papers that you need to study for the first year. Okay, so first one is anatomy. Anatomy is a general anatomy. Okay, general anatomy, physiology, biochem. Combined, you have one paper. Anatomy as a whole has one paper, and dental anatomy and dental histology is having the one paper in combined. So ये तीन है जो study करना पड़ता है in the first year. So let's talk about the books that are essential for these subjects. So first one, start with the anatomy. In anatomy in India, this book that is called as BD चौरसिया और BDC, short form में BDC भी कहते हैं इसे popularly. ये बहुत ज्यादा popular है एनाटमी के लिए. ओके, एनाटमी के लिए बाकी बुक्स भी लाइक विश्राम सिंह एंड ऑल, बट बीडीसी पर्सनली मैंने भी यही रेफर किया था. सो इसके अंदर आपको वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड वन हैंडबुक मिलता है. ओके, हैंडबुक. ओके, फॉर योर नॉलेज, फर्स्ट ईयर में फॉर डेंटल स्टूडेंट हमें लिम्स नहीं रहते, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स नहीं रहते. सो हमें पोर्शन रहता है सिर्फ एच एंड एफ, हेड, नेक एंड फेस. देन आफ्टर थोरैक्स, एब्डोमेन, न्यूरो एंड इंक्लूडिंग वन हैंडबुक. ओके, सो इतना पोर्शन रहता है. इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी वो भी है. देन आफ्टर एम्ब्रियो है, हिस्टो है, देन आफ्टर डाइसेक्शन भी है. सो इसके लिए अलग अलग बुक्स हैं. ओके, सो ये सब. सो बेसिकली दिस इज फॉर द थ्योरी, दिस इज फॉर द प्रैक्टिकल. ओके, सो इतना तो है एनाटॉमी में जो कि आपको लेना चाहिए या फिर लेना होगा. Then after second one, let's move toward the biochemistry and physiology. So for the physiology and biochemistry, these are the two subjects having one paper in the combination. So what are the books that you could refer for that? The physiology के लिए Semulingam is there. So Semulingam is there and AK Jain is there. Semulingam is like कि revision के लिए, pass होने के लिए, that's enough. But if you want to really study for the physiology genuinely, कंसेप्ट आपको पता करना है या फिर डीपली स्टडी करना है मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, सो उसके लिए आपको एके जैन रेफर करना चाहिए. मैंने पर्सनली एके जैन रेफर किया था एंड किसी किसी पॉइंट के लिए फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर पर्पस आई हैव यूज्ड द सेमुलिंगम एज वेल. सो गाइटन, गाइटन इज द आइडियल बुक या फिर स्टैंडर्ड बुक है फिजियोलॉजी के लिए, बट फॉर द डेंटल स्टूडेंट these two books are sufficient. Now let's go toward the biochemistry. Now in biochemistry, सत्यनारायण is the book, and सत्यनारायण के अंदर वैसे ही पोर्शन दिया है जैसे कि आप आज तक स्टडी करते आए लाइक इन 11th एंड 12th. सो मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका कवर हो गया है ऑलरेडी 11th 12th में, बट यू नीड टू जस्ट फ्रेश इट अप. ओके, सो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी. ओके, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी दोनों भी इजी है, बस फिजियोलॉजी में कॉम्प्लिकेशंस इज कि आपको वहां पर पाथवेज या फिर मैकेनिज्म्स लर्न करने पड़ते हैं. सो दैट इज. Then after finally is dental anatomy and dental histology. So dental anatomy and the dental histology are subject from the department of oral pathology. ओरल पैथोलॉजी में आता है बिकॉज इन ओरल पैथोलॉजी इज अ सब्जेक्ट फॉर द थर्ड ईयर जिसकी आपको अभी जरूरत नहीं, बट फॉर द फर्स्ट ईयर you need to study the dental anatomy and the dental histology, for which standard books are the Wheelers and the Orban. Okay, so Wheeler जिसके अंदर आपको टूथ, पर्टिकुलर टूथ क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, या फिर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, या फिर उसको कार्व कैसे करते हैं,
सो कार्विंग इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हियर। सो व्हाट इज द कार्विंग? आपको एक टूथ है, उसका वैक्स ब्लॉक दिया जाएगा आपको, एंड फ्रॉम दैट वैक्स ब्लॉक यू नीड टू मेक वन टूथ। ओके, सो टूथ कौन सा भी हो सकता है, इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर। सो ये सब है जो कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि यू नीड टू carve one tooth, जिसके लिए मार्क्स भी होते हैं। देन आफ्टर लेट्स मूव टुवर्ड द डेंटल हिस्टोलॉजी। इन द डेंटल हिस्टोलॉजी विल गेट टू बुक्स। फर्स्ट वन इज ऑर्बन, okay, वो तो स्टैंडर्ड है, एंड देन आफ्टर यू विल गेट द एटलास। इन एटलास व्हाट यू विल गेट द डायग्राम्स, वेल कलर्ड, वेल लेबल्ड डायग्राम, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा in order to understand a particular topic. So what is orban? So orban is a standard book for the dental histology, जिसके अंदर each and every mechanism, each and every structure of the tooth and the supporting structure of the tooth in the oral कैविटी, जिसके बारे में हर एक हिस्टोलॉजिकल एंड एमोलॉजिक स्टेप दी हुई है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक दैट यू नीड टू रेफर फॉर, बिकॉज इसका रेफरेंस नॉट ओनली इन द डेंटल हिस्टोलॉजी पार्ट बट आल्सो इन द ओरल पैथोलॉजी एंड इन द सब्सिक्वेंट स्टडीज इन द डेंटल एजुकेशन यू विल बी रिक्वायरिंग दैट। ओके, सो इसको थरोली पढ़ना। हाँ, हो सकता है कि इट माइट you might feel like कि this book is a very hard to understand, this is having the very much standard language, but that doesn't matter, because the knowledge that this book is containing is a lot. Okay, so आपको इसे अंडरस्टैंड करना जरूरी है। so इतने तो बुक्स है जो कि आपको एट लीस्ट फर्स्ट ईयर में लेनी चाहिए, या फिर डजेंट मैटर दैट वेदर यू आर टेकिंग इट सेकंड हैंड और द न्यू कॉपीज। ओके, बट न्यू कॉपीज लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड वैरी करता है, लाइक एडिशन वैरी करता है, कि फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, तो लेटेस्ट एडिशन। एंड तो फायदा ऐसा है कि सेकंड हैंड बुक लेने के, कि फ्रॉम द सीनियर्स यू गेट द सेकंड हैंड बुक्स इन व्हिच you will get the markings, you will get the underlines, you will get the important questions, highlights, and the question papers, or the question that has been written on the back side of the book or the particular topic, वो आपको मिलेगा। So it will help you to minimize your study time so that आपको उसका एग्जाम पीरियड में हेल्प हो सकती है। एंड फॉर द डेंटल एनाटॉमी, BDS चौरसिया के अंदर मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है, ओरल म्यूकोसा का जो भी स्ट्रक्चर्स है, एवरीथिंग, बिकॉज इवेंचुअली इन द डेंटल लाइफ यू विल need this knowledge about the oral cavity and the orofacial structures, dentofacial structures in your clinical practice also. So you need to learn the muscles, the muscle attachment, the nerve supply, the blood supply, everything related to these uh, head, neck and face region thoroughly. अगर नीचे body part का नहीं भी हुआ तो, लेकिन head, neck and face is important for the anatomy that you need to study a lot. Okay, so third volume is H and F, head, neck and face region. Fourth volume is about the neuro. Okay, so upper limb and thorax है ये फर्स्ट वॉल्यूम में, बट इसके अंदर thorax इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ ओनली thorax, अपर लिम्ब नहीं है एंड लोअर लिम्ब नहीं है इसके सेकंड के अंदर, जिसके अंदर हमें सिर्फ एब्डोमेन इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट। हैंडबुक के अंदर तीन चार क्वेश्चन तो आते ही है। एक आएगा LAQ आता है, जिसके अंदर लॉन्ग बोन का ब्लड सप्लाई है लॉन्ग आंसर में, एंड देन आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स है LAQ में, एंड सेकंड वन इज जिसमॉइड बोन एक है। ओके, देन आफ्टर पोजीशन है बेसिक के लिए, पहले 8 दिन में हैंडबुक कवर करना आपको इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको आगे वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, क्योंकि डेंटल के रिलेटेड टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट या फिर क्यूरीज मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। सो आपका सपोर्ट चाहिए। सो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्टडी।